इस डेमो में हम SSH की डिप्लॉय करेंगे मैनुअली। तो इससे पहले कि हम की डिप्लॉय करें, अ, हम ये पहले देख लेते हैं कि जो हमने कॉपी आईडी कमांड के ज़रिए की डिप्लॉय की थी उसने किया क्या जाके उस लिनक्स वीएम पे। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट log in to our Linux VM here. So we'll type SSH, then we'll define the path of the key here. That's the private key. So /SSH demo dash key space and then the username and the IP address. And then we'll press enter. तो अब हमने लिनक्स वीएम के अंदर लॉगिन कर लिया है यूजिंग SSH. तो लेट्स क्लियर द स्क्रीन and let's take the listing, also including the hidden items. So we'll type ls-la. तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो .ssh का फोल्डर है, ये जो है अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है, जिसमें कि आप टाइमिंग भी देख सकते हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने कॉपी आईडी कमांड यूज़ करी तो उसने इस लिनक्स वीएम के अंदर लॉगिन किया और फिर ये डायरेक्टरी क्रिएट की. तो लेट्स cd into this directory, cd.ssh, and then let's take listing of this directory. इस डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ एक ही फाइल है जिसका नाम है authorized keys. तो जब हमने कॉपी आईडी कमांड यूज़ करी तो उसने इस लिनक्स वीएम के अंदर लॉगिन किया यूजिंग SSH विद पासवर्ड. उसके बाद उसने इस यूज़र जो कि सयाल है इस वीएम के ऊपर, इसके होम फोल्डर के अंदर एक हिडन डायरेक्टरी क्रिएट की .ssh के नाम से. उस हिडन डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की जिसका नाम है ऑथराइज्ड कीज़. तो अब इस फाइल के कंटेंट्स को देख लेते हैं. तो we'll just clear the screen here. We'll use the cat command to view the contents of that file. तो we'll type cat, उसके बाद जो है उस फाइल का नाम, तो that's authorized keys and then we'll press enter. तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो जो है, जो हमने पब्लिक की पहले जनरेट की थी, वो पब्लिक की जो है उस कॉपी आईडी कमांड ने आके इस ऑथराइज कीज़ की फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया. तो मैन्युअली अगर आपने की डिप्लॉय करनी है तो आपको वही स्टेप्स करने पड़ेंगे जो कि कॉपी आईडी कमांड ने आपके लिए ऑटोमेटिकली कर दिया. यूज द rm कमांड, rm-rf.ssh. अगर हम दोबारा से अब लिस्टिंग लेंगे तो वो SSH का जो फोल्डर है अब वो डिलीट हो गया. तो लेट्स लॉग आउट ऑफ द VM यूजिंग Ctrl-D. तो अभी हम अपने लोकल मशीन पे वापस आ गए एंड देन वी आर इन द सेम फोल्डर SSH कीज डेमो. तो यहाँ पे इस वक्त जो हमारी पब्लिक की है, हम उसके कंटेंट्स जो हैं वो कॉपी करेंगे. तो we'll also use the cat command here as well, and then we'll list the contents of the public key. So that'll be cat ssh-demo-key.pub. Press enter. और अब ये पब्लिक की के कंटेंट्स जो हैं वो टर्मिनल पे आगे सामने. तो we'll copy this, then we'll clear the screen. और अब हम SSH करेंगे यूजिंग पासवर्ड टू द लिनक्स VM. So that be SSH. Then we'll type the username, @ IP address. Then we'll press enter.
अब ये पासवर्ड पूछ रहा है हमसे, वी विल राइट द पासवर्ड, प्रेस एंटर, and now we are logged in to the Linux VM. We'll clear the screen और फिर हम यहाँ से लिस्टिंग ले लेंगे अभी. और there is no .ssh folder here, so we'll create one. We'll use the mkdir command to make the directory, and then we'll type the name .ssh. Press enter, and then we'll take the listing here again. So now अभी हमारे पास जो है ये .ssh का डायरेक्टरी जो है क्रिएट हो गई है. तो we'll cd into this. उसके बाद जो है हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे ऑथराइज्ड कीज के नाम से. तो we'll use the touch command to create the file. तो इस टच और उसके बाद हम फाइल का नाम लिखेंगे ऑथराइज्ड कीज. देन विल प्रेस एंटर. अगर हम लिस्टिंग लेंगे इसकी, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड कीज की जो फाइल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट फाइल एग्जिस्ट करती है. तो नाउ वी विल एडिट द फाइल यूजिंग विम. सो वी विल टाइप विम एंड देन वी विल टाइप द नेम ऑफ दिस फाइल. देन विल प्रेस एंटर और ये विम एडिटर के अंदर ये फाइल ओपन हो गई है. नाउ विल प्रेस आई टू गेट इनटू द इंसर्ट मोड. तो अब ये नीचे आपको इंसर्ट मोड लिखा हुआ नजर आ रहा है. देन वी आर सिंपली जस्ट डू कमांड वी. अगर आप विंडोज के ऊपर हैं तो आई थिंक दैट विल बी शिफ्ट कंट्रोल वी. विल डू कमांड वी हियर. तो ये जो है मेरे पास एक क्लिपबोर्ड मैनेजर है, उसके अंदर वो कंटेंट्स जो थे वो रिप्लेस हो गए थे जो कि मैंने सेलेक्ट किया था टर्मिनल के ऊपर. तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है. तो मैंने अपने क्लिपबोर्ड मैनेजर से वो जो की हमने पहले कॉपी की थी वो हमने क्लिपबोर्ड मैनेजर के ज़रिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. बट यू कैन जस्ट सिंपली पेस्ट इट बाय कॉपिंग इट अगेन. और अब जो है यहाँ पे की पेस्ट हो गई है. देन वी विल प्रेस एस्केप की एंड देन वी गेट आउट ऑफ द इंसर्ट मोड एंड देन वी विल टाइप $WQ. $WQ का मतलब है कि हम विम को कह रहे हैं कि W मीन्स राइट द फाइल एंड देन Q मीन्स क्विट. तो दैट्स व्हाट इट विल डू. और नाउ मेरे पास जो है यहाँ पे पहले इसका साइज जो था वो 0 आ रहा था. तो लेट्स जस्ट टेक द लिस्टिंग अगेन. और अब यहाँ पे ये 745 बाइट्स जो है इसका साइज दिखा रहा है. लेट मी जस्ट डू LH. तो ये बाइट्स ही दिखा रहा है यहाँ पे. तो लेट्स लॉग आउट ऑफ द सर्वर और द VM हियर. सो कंट्रोल D और अब हम लॉग आउट हो गए. वी आर बैक टू आवर लोकल मशीन हियर. क्लियर द स्क्रीन. और अब हम SSH करेंगे यूजिंग द की नॉट द पासवर्ड. सो विल टाइप SSH-I. उसके बाद हम की का पाथ देंगे यहाँ पे. देयर विल बी SSH-demo-key और ये प्राइवेट की है क्योंकि हम इस पर लॉग इन करना चाह रहे हैं. देन विल टाइप द यूजर नेम, @ IP एड्रेस. और अगर की जो है वो मैन्युअली सही डिप्लॉय हुई है तो ये जो है पासवर्ड नहीं पूछेगा और हमें लॉगिन कर देगा लिनक्स VM के अंदर. लेट्स प्रेस एंटर. और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉम्प्ट जो है वो अपडेट हो गया है एंड आई एम नाउ लॉग्ड इन टू द लिनक्स VM.